afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. प्रियांशी निधि अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्रियांशी Yes, sir. कर लिया. okay we'll wait for 1 minute and then we will start. It is still a few seconds remaining for the time. तो आज जो है हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन शुरू करेंगे. ओके सो वी आर गोइंग इन अ सीक्वेंस. जो आपके चैप्टर्स के सीक्वेंस है वही फॉलो कर रहे हैं. अभी तक हमने ट्रायंगल्स तक वी हैव डन 1 राउंड ऑफ रिवीजन. ठीक है. So we will continue the same way. Okay, let's get started. Okay, so coordinate geometry, let's do a few questions to revise. In what ratio does the point P 3,11/5 divide the line segment joining 5, 0 and 0, 4? Okay, so let me call these points as A, B. This point is 5, 0 and this point is 0, 4. And it's given that there is a point here. In what ratio does it divide? Okay, so standard tarika hai karne ka, we will assume it divides it in the ratio k:1. तो P के क्या coordinates बनेंगे? P के coordinates बनेंगे 5/k+1 and 4k/k+1. Right? Yes. So we will equate the coordinates. So we will get 5/k+1 is equal to 3. Okay, which means 5 is equal to 3k+3 and k is equal to 2/3. Right? Let's also do this. 4k/k+1 is equal to 11/5 implies 20k is equal to 11k+11. Okay, which means 9k is equal to 11 and k is equal to 11/9. Right? तो k की क्या वैल्यू आई है? They are different. k की वैल्यू यहाँ 2/3 आई, यहाँ पे 11/9 आई. So what does it mean? सेम आनी चाहिए. सेम आनी चाहिए. It should be same. But ये सेम नहीं है. Right? We saw it's not same. Did we make a mistake? 20k 11 Maybe. नहीं. Right? So it is correct, right? तो सेम नहीं आई. इसका क्या मतलब है? So that the information which is given is not correct. Yes. What part of the information is not correct? You are right. What part is not correct? The problem is that P does not lie on AB. AB पर P नहीं है, P कहीं और है, जैसे यहां है. और ये जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं ये तो तभी एप्लीकेबल है जब की पॉइंट सेगमेंट पर लाई करता हो या फिर सेगमेंट के एक्सटेंशन पर लाई करता हो.
एक्सटेंशन पे भी लाई करेगा तो भी आ जाएगा, बस फर्क ये होगा कि नेगेटिव रेशियो आएगी तो, राइट? Yes. एक्सटर्नल Yes. डिवीजन बोलते हैं जिसको, उसमें रेशियो नेगेटिव होती है, और यहाँ पे रेशियो जो है पॉजिटिव तो आ रही है लेकिन अनइक्वल आ रही है। इसका मतलब कि इट डज नॉट लाई ऑन द लाइन सेगमेंट और द एक्सटेंशन ऑफ द लाइन सेगमेंट, वो कहीं और है पॉइंट। Okay, so the answer is P does not lie on the segment and hence the ratio cannot be determined. Actually, ratio doesn't make any sense. Okay, it's not that we can't find it, it doesn't make any sense. Okay, so although this question did appear in NTSC once, but this was a wrong question. Okay, as such, it was a wrong question because they had given options which did not include. The point doesn't lie on the line. But as such, this, what we learn from this is this can also be used as a check for, what can we use this method to check for? Check for collinearity. हम अगर ये एज्यूम कर लें कि पॉइंट उस पर लाई करता है, के की वैल्यू निकालें वो अनइक्वल आ जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि द 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो कोलिनियरिटी के चेक के लिए भी ये एक अच्छा मेथड है। Okay, let's do the next question. The vertices of the triangle ABC are respectively ABC, the given, all of those are given. If D is the midpoint of DC, find length AD. So this is not included in our syllabus. What is not included? The area of triangle. We don't have to find the area. Oh, yes, sir. We have to find the length. Of AD. Okay, so what does it mean? A, B, C, and D is the midpoint of BC. We have to find this length. ठीक है Sir, ना? D के coordinates है -1, 2. हाँ, तो हम B है हमारे पास, No, sorry, 3. -1, 3. हाँ, तो 3 plus -5, which is -2/2. Okay, so -1 and -1. 6/2, 3. Okay, ये D के कोऑर्डिनेट्स हैं, A के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, right? So what is the distance? Distance is -1 minus -1 whole square, okay, plus 3 minus 2 whole square under root, which is equal to, this is 0 and this is 1, so 1 square 1 square unit. right? So the answer is 1 unit, not a square unit, 1 unit. Yes, sir. Okay, its length 1 unit. The vertices of a triangle are, then the perimeter of the triangle is. Okay, so हमें perimeter निकालना है, which is nothing but adding the 3 lengths. There is no other way. Okay, so we have to find AB, we have to find BC, and we have to find BC and AC. AC. Okay, ये तीनों lengths निकालने हैं, तो let's find those out. So this will be actually, you know, 4 square plus 4 unit आ जाएगी. ये 4 आ गई, और AC निकाल लेते हैं, AC 3 आ जाएगी, right? Yes, sir. And we have to find this, which is 4 square plus 3 square. So 5 unit. 5. Okay, so this is So 12 unit. 12. That's the answer. The ratio in which x-axis divides internally the line segment joining
these 2 points, right? So x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो किस फॉर्म का तो हो? वो y एक्सिस पे 0 होती है, हाँ, उसका y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट 0 0 होता है. ठीक है, तो द पॉइंट विल बी ऑफ दिस टाइप. Okay, so we have, रेशियो k रेशियो 1 मान लेंगे. we can take 5 comma 3 and minus 3 comma minus 2, and the point on this is x comma 0. ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स सेक्शन फॉर्मूला से भी लिखेंगे k/1 मानकर. सो इट विल बी -3, रेशियो है 3:2. ओके, बाय k+1, और ये हो जाएगा -2k + 3 बाय k+1. ठीक है, तो अब हमें रेशो निकालनी है केवल. ओके, x तो निकालना ही नहीं है, तो केवल ऑर्डिनेट्स को इक्वेट करेंगे. ओके, Yes. -2k + 3 by k+1 is equal to 0, which means k is equal to 3/2. Okay, so the ratio is 3/2. 3:1, 3:2. ओके, सो 3/2 भी लिखा हो सकता है और 3:2 भी हो सकता है. दोनों ही तरह से रेशो को लिखा जाता है. ठीक है, बोथ आर करेक्ट. Okay. If the points, okay, with the given points are collinear, then relationship between x and y is. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो क्वेश्चन है essentially, right, this question was mainly designed because of area formula. Yes. Okay, area of Triangle. ट्राइंगल, राइट. तो उसके फॉर्मूले से ये बहुत जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन वो तो अब हमारे कोर्स में नहीं है. लेट्स से स्टिल वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन, ओके, बिकॉज दिस क्वेश्चन कैन स्टिल बी इन कोर्स. तो वो हम कैसे करेंगे? सर इसमें पहले हमें AB + BC = AC. कैसे? सर AB + BC = AC, कॉलिनियर का फॉर्मूला. हाँ, उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है. क्या है वो प्रॉब्लम? उसमें आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये किस ऑर्डर में है पॉइंट्स. क्योंकि आप जो मेथड बोल रहे हैं, यस इट लुक्स ओके व्हेन वी नो द पॉइंट्स, तब हम क्या करते हैं कि तीनों लेंथ्स कैलकुलेट करते हैं, फिर बड़ी लेंथ को दोनों छोटी लेंथ्स के सम के इक्वल रखने की कोशिश करते हैं, राइट. बट यहाँ पे तो ये पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं. अनदर अरेंजमेंट कुड बी एक्चुअली दैट ABC, राइट. ऐसे भी तो अरेंज हो सकते हैं. हमें नहीं पता कौन सा सही अरेंजमेंट है, तो हमें मल्टीपल केसेस बना के सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन. दैट विल टेक अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. तो लेंथ फॉर्मूला जो है, अगर आप उसके रास्ते पे जाते हैं तो थोड़ा सा फंस जाते हैं. सॉल्व तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, बट बहुत समय लगेगा. So what is the other option we have without using the area formula? अभी हमने कुछ क्वेश्चंस पहले बात की है. What can we use? We can use the section formula. क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला में ऑर्डर पता हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों नहीं पड़ता? अगर ये बाहर भी होगा भी, इधर या इधर, तो रेशो नेगेटिव आएगी, राइट. लेकिन रेशो आएगी और दोनों की सेम होनी चाहिए कोलिनियरिटी के लिए, है ना. और हमें इसमें ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, रेशो नेगेटिव आ जाती है विद द सेम फॉर्मूला एंड वी डोंट हैव टू वरी. So we can use the section formula. Let's write the coordinates, okay, of the point. Okay, I am going to use this arrangement. Okay,
I'm going to put 1 comma 1 in between because it will make writing the ratios easier. ये वाला यूज करेंगे. Okay, it will make writing the ratios easier. So C के क्या coordinates बने? X by K plus 1 and ky by K plus 1. ये equate कर लीजिए. So we will get X by K plus 1 is equal to 1 and ky by K plus 1 is equal to 1. Okay, so this will give us X is equal to K plus 1 and K is equal to X minus 1. Okay, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? ky is equal to K plus 1. So K y minus 1 is equal to 1. So K is equal to 1 upon y minus 1. दोनों क्या होने चाहिए? दोनों K की वैल्यू फाइंड की वो सेम होनी चाहिए. So we will equate X minus 1 equal to 1 upon y minus 1. Right? Which will give us X minus 1 into, sorry, y minus 1 is equal to 1, which is xy x minus y plus 1 is equal to 1. Okay, so xy minus x minus y is equal to 0. Okay, or xy is equal to x plus y. So ये आ गया, B आ गया हमारा रिलेशन. Okay. Okay, sir. तो जो कोलिनियरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, अब आप इससे हमें क्या समझ आता है? जो याद रखने वाली बात है कि कोलिनियरिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं जहां पे हमें वो पॉइंट्स मालूम है, राइट, ऑल द 3 पॉइंट्स आर नोन, कोई वेरिएबल्स इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर. इस तरह के क्वेश्चन में आपके पास 2 ऑप्शन है. आप लेंथ यूज कर सकते हैं एंड सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. दोनों ही आपके पास ऑप्शंस हैं एंड यूजुअली लेंथ विल बी द फास्टर मेथड. सर जी रोम राम राम शिव. शिव टाइम से राम राम होती है, आधी क्लास में नहीं. ठीक है बेटा, ये चीजें आपको मेंटेन करनी चाहिए. ठीक है. अब जो है, अगर हमें ये नहीं मालूम है कि ऑर्डर क्या है पॉइंट्स का, उसमें हमें सेक्शन फॉर्मूला इज अ मोर वर्सेटाइल फॉर्मूला बिकॉज वो किसी भी ऑर्डर में एप्लीकेबल होता है. सो वी शुड यूज सेक्शन फॉर्मूला इन क्वेश्चंस लाइक दिस, नॉट द लेंथ फॉर्मूला. ठीक है. ओके, लेट्स मूव ऑन. Coordinates of P and Q are given. The abscissa, what is the meaning of abscissa? Sir, x-axis for coordinate. X coordinate. Okay, X coordinate of a point R on the line segment PQ such that PR by PQ is equal to 3 by 5. ओके, सो कैसे करेंगे हम? सर इसमें 3:2 हो जाएगा. वेरी वेरी गुड. ओके, तो इसमें जो ट्रिक है इस क्वेश्चन में वो ये है कि पीपल माइट थिंक द रेशियो इज 3:5. देखने में एकदम यही दिखता है और यही इस क्वेश्चन का ट्रैप है. ओके, जो भी ये मान के करेंगे उनका ये गलत हो जाएगा. तो बेस्ट क्या है कि आप एटलीस्ट वंस यू शुड ड्रॉ, राइट? इट्स अ, दिस ड्राइंग डजंट टेक एनी टाइम. द पॉइंट्स आर P and Q. So coordinates are 1 and 3. Okay, great. Okay, so P and Q, and we are saying R of a
R is the dividing point. Okay, so PR is 3, ratio 3, and PQ is ratio 5. हम तो रेशो R का to ratio is equal to हम रेशो कहां से लेते हैं? हमेशा फ्रॉम द डिवाइडिंग पॉइंट. Ratios are always measured from the point to the dividing point, then from the dividing point to the other point. ठीक है, तो ये तो गलत है. तो यहां क्या बचा है? 3 में से क्या 5 माइनस 3, तो ये 2 बचा है. तो जो m is to n है वो m is to, ये m है और ये n है. सो 3 is to 2 है. ओके, तो अब r के कोऑर्डिनेट्स आप लिख लीजिए. अब तो कोई मुश्किल नहीं है. ये 4 माइनस 3 है और ये माइनस 1 7 है. तो हम r का केवल हमें एब्सिसा लिखना है. सो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 4 प्लस माइनस 1 into 3 by 5, which is 8 minus 3 by 5, which is 1. that is 1. Okay, so the abscissa is 1. Only 1 is the answer. Okay, very good. You figured out the trap. That is the only thing in this question. Okay. If the line segment joining 2, 3 and minus 1, 2 is divided internally in ratio 3:4 by the line x plus 2y is equal to k, the value of k is. Okay, again, as usual, we will first draw it, right? So this point is 2, 3 and this point is minus 1, 2. This is divided in a ratio 3:4 internally, because internally bata diya hai, so we know where it divides. And this line is x plus 2y is equal to k. Okay, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे. Yes, Okay, sir. so which is 2 into 4 8 minus 3 by 7, comma 3 into 4, which is 12, So 5 upon 7 and 18 upon 7. plus 2 into 3 6 by 7. Okay, which is equal to 5 by 7, comma 18 by 7. Okay, now this point lies on this line, right? This point is common, so it lies on this By line. 7, So we will just put the values in the given line. Okay, so this will give us the value of k. Okay, so 5 plus 36 by 7 is equal to 41 by 7. Okay, this is the answer. जी बच्चों की वीडियो पॉज है, देख लो ना. God ran one day. Okay. Clear? yes, sir. Okay. Let's do the next question. If the points, there are 3 given points, are the vertices of an equilateral triangle, then the value of k. सर हम इसमें AB is equal to BC is equal to AC रख के वैल्यू निकाल लेंगे. सर जी रोम. Shiv, don't do this again. Ram हो गई है. Ram cannot be a way to disturb सर you. सबने वीडियो पॉज कर रखी है, ये बता रहा हूँ. सर इन्होंने वीडियो भी ऑन नहीं की है. हाँ. आप इन्हें रिमूव कर दीजिएगा, ज्यादा I will remove. इनडिसिप्लिन में रहेंगे. वीडियो भी ऑफ की हुई है और सर बोले जा मेरा रहे हैं. नर्व Ikra,
Vansh and Shweta अपने videos on करिए. Tanisha also. Vansh, Manglik, Shweta, on your video. Shweta and Vishal. Vansh, Manglik. Video on करिए. I'll check again. अगर नहीं है तो I will have to remove you, right? So in the next 1 minute, switch on your videos. Okay, so we will use the length formula in this question. So which two lengths should we equate? Sir, AB is equal to BC. AB. B is which one? This one. AB is equal to BC. देखिए आप कुछ भी कर सकते हैं. Any of those are will give you the same result, right? However, my suggestion here is that it might be easier to equate AC is equal to BC. Yes, sir. Okay. Why? Because there is a square root involved here, right? There is a third value. There is an irrational number here. ठीक है, तो वो दोनों साइड आ जाएगा इक्वालिटी के, तो सॉल्व करने में आसानी रहेगी, right? So let's do this. Okay. So rather than doing AC is equal to BC to make our life easier, what can we do? We can do AC square is equal to BC square. Yes. Okay, so that we don't with the square root. Okay, तो वो करके देखते हैं. ठीक है, तो AC square is minus root 3 plus 1 whole square plus K plus 1 whole square. And what is BC square? Which is 1 plus root 3 whole square plus 1 minus K whole square. Okay. So let's just expand this in a way which makes it easier for us, right? K की value 0 आएगी. Let's see. K plus 1 whole square minus K minus 1 whole square is equal to root 3 plus 1 whole square minus root 3 minus 1 whole square. Okay. So what will this give? 2K into 2 is equal to 2 root 3 into 2. सर 0 नहीं आएगी, कुछ और आएगी, हमने गलत कर दिया. K की वैल्यू root 3 आ गई. Right? Yes, sir. Okay. So what I did here was, rather than opening up the brackets, I did the A square minus B square identity. Okay. I brought this here and this there, just to make life easier. Even if you open up the brackets, it will just be more terms to deal with, but answer should be the same. Okay. Okay, let's move forward. Okay. Somebody can actually, at home, if you want, in the video, you could see the question again and try solving it by equating it this way.
AB square is equal to, let's say, AC square. ओके आप ऐसे भी करके देख सकते हो कि was that faster or this faster. It will not be a huge difference, I guess, but this should be a little quicker क्योंकि हमारा √3 दोनों साइड है. Okay. Let's do next question. The center of a circle passing through the points this, and this. How will we do this now? हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. कैसे कर सकते हैं? Anybody? सर इसका आंसर 5 और -1 इसके कोऑर्डिनेट्स. कैसे किया आपने? सर हमने 7 और -5 एंड 3, इनका मिडिल निकाल लिया, सेंटर. ऐसे करके सेंटर निकाला आपने. ओके फिर सर सीधे सेंटर निकालने से ये आंसर आ गया. सेंटर कैसे निकाला आपने? सर 7 + 3/2 और -5 + 3/2. और ऐसे ही अगर यही सर 7, -5 और 3, -7 का निकाल रहे तो वो भी 5, -1 ही आ रहा है. नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड. आप इन पॉइंट्स का, मान लीजिए इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ए, बी और सी. तो आप क्या कह रहे हैं कि ए बी का मिड पॉइंट ही सेंटर होगा? ऐसा क्यों होगा? नहीं, हो सकता है बाय चांस आ गया हो, लेकिन ऐसा क्यों होगा? ऐसा तो नहीं दिया है कि ये डायगोनल है. सर अगर डायरेक्ट एसी का करे तो एसी का भी अगर आप करेंगे, ऐसा तो गिवन नहीं है ना कि एसी डायगोनल है. वो ड्राइंग में लग रहा होगा मेरी, और हो सकता है कि बाय चांस हो भी. राइट मतलब इन दोनों का एसी है, ये ए बी सी. एसी का मिड पॉइंट इज 5.1. सर क्योंकि जो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं सर्कल के, वो इंटरसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट व्हिच इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. नहीं, ऐसा तो कोई थ्योरम नहीं है. देखिए, ये केवल पॉइंट्स ऑन द सर्कल हैं. ऐसा कहीं नहीं गिवन है कि ये डायमीटर पे है. राइट हमें ये पता है कि ए बी एक कॉर्ड है और बी सी एक कॉर्ड है. कॉर्ड सी तो पता है हमें, और ए सी भी एक कॉर्ड है. वो डायमीटर हो ये कोई जरूरी नहीं है. राइट तो लेट्स से आई ड्रॉ इट. Okay, and the circle is slightly here. The center is here, slightly off the line. It can happen. क्योंकि कोई थियरम तो नहीं है जो आप बोल रहे हैं. तो देखिए, सबसे पहली बात
कि अगर मैं इन सबको ज्वाइन करूं तो ये सब रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ओके, तो मेरे पास एक तरीका सेंटर निकालने का क्या है कि मैं मान लूं कि सेंटर है x और y, फिर दिस डिस्टेंस is equal to this distance is equal to this distance, right? So we can say AC is equal to, sorry, not AC. Let's say this point is O. So I can say OA is equal to R, OB is equal to R, and OC is equal to R. ठीक है, अब हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, x, y और r, और तीन इक्वेशंस हैं, राइट? 3 variables, 3 equations. So we can solve it. Okay, we have number of equations which is equal to number of variables. And they are definitely independent also from what we see, right? So we can solve it. And we can find the value of x, y, and r, all the three. This is one way of solving this problem. Okay. What is the other way? So one way. Distance formula. Three times. What is the other way to solve this problem? The other way to solve this problem is, this is a chord, right? We can find the midpoint. We take another chord, any other chord, we find the midpoint. Then we find the slope of this line AB. We know how to find the slope. Then we can find the slope of a perpendicular line. We can find the equation of this line. Then we can find the equation of this line, and they will intersect at the center. So ये line निकाली, ये line निकाली, दोनों को simultaneously solve कर लिया. We will get the center. Now, obviously it has some work to be done, but the good news here is only two variables. Okay. Perpendicular bisector of chords. That is our second method. The benefit is two variables. Only x and y. What is the third method? The third method is to pick up each point and find the distances and see those distances should be equal. Okay, because we know the options, right? Options are given to us. So the third method is, I find the distance of this point from this, call it O, find OA, find OB, OC, and see if it is equal. Then call this as O and find OA, OB, and OC and see if it is equal. So can I know the answer of this question? Yeah, the answer, see, I think the answer is one of these two, C or D, but I'll have to solve it. We will do it in the next class. Okay, we will start from this question. आप क्वेश्चन नोट कर लो या फिर वीडियो में से देख लेना, मैं अपलोड करूंगा आज ही, ठीक है? So because I am coming to the end of the class, I can't solve it in this much time. Okay, so I will start from this question. Okay, the method we will use first is the third method.